What does growth look like? An infrastructure? Seamless connectivity? To us, growth is when we help you get closer to your dreams. Sapient, creating happy investors. Che. Hello, 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 hello.
सुप्रभात दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। GCH प्रेजेंट्स बिलमार्ट GCH क्रिकेट सुपर लीग सीजन 1। हमारे साथ वाइस प्रेसिडेंट साहब राज पुरोहित साहब, राज के पुरोहित जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राज जी, आपकी ख्याति पूरे मुंबई में, महाराष्ट्र में फैली हुई है और आज ये जो GCH ने इनिशिएटिव लिया है, देखिए तमाम क्लबों के प्रीमियर लीग हो रहे हैं लेकिन GCH का हो नहीं रहा था, लेकिन 2022 की दीपावली पे एक शुभ संदेश आया। आप इसको कितने क्या नज़रिए से देखते हैं, GCH का अपना लीग? गरवारे क्लब आज पूरे फुल फॉर्म में है। गरवारे क्लब मुंबई शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है। गरवारे क्लब स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हो या कल्चरल एक्टिविटीज, गरवारे क्लब इज डूइंग बेस्ट नाउ। In particular in field of cricket, we are facing lacking of many things. But once the Dalal become the chairman of the advisory committee, he has planned GCS Cricket League. And the managing committee have supported him fully. And see the result. हम रिजल्ट देखते हैं कि पूरे टीमें तैयार है, ऑनर्स तैयार है, खिलाड़ी तैयार है और आज शुभ दिन पर उसकी शुरुआत हुई है। ये एक आने वाले गरवारे क्लब का जो लाइन ऑफ एक्शन है कि हमको क्रिकेट में आगे जाना है, उसकी शुरुआत है। तो ये जो आपने कहा कि मैं क्या देखता हूँ, तो मैं ये देखता हूँ कि गरवारे क्लब क्रिकेट में आने वाले समय में आगे बढ़ेगा। नए नए जो लोग हैं वो उसमें से आगे आएंगे और हमारी ऐसी सपना है कि हमारे क्लब में से भी कोई सचिन तेंदुलकर निकले, कोई गावस्कर निकले। ये हमारा सपना है। और जो एडवाइजरी कमेटी है, दलाल साहब है, वो इस मार्ग पे लगे हुए हैं। और एक और गुड न्यूज़ आपको बताना चाहता हूँ कि अब मुंबई शहर में गरवारे क्लब का अपना खुद का पिच हो, खुद का ग्राउंड हो, वो मैनेजिंग कमेटी ने, उसके लिए फंड भी हमारे पास तैयार है। बहुत जल्दी ही, वो दिन दूर नहीं, जब गरवारे क्लब का खुद का अपना पिच होगा, खुद का अपना ग्राउंड होगा और जो युवा है गरवारे क्लब में, जो यूथ है, जो क्रिकेटर्स है, जो क्रिकेट में खेलना चाहते हैं, जो क्रिकेट में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, उनके लिए और उनके सपनों को पूरा होगा, ऐसा हमारी इच्छा है। सर, एक आखिरी सवाल। 1974 में जो पौधा लगा था वटवृक्ष बन रहा है और 2 साल बाद 50वां साल आएगा, गोल्डन जुबली ईयर। आपको लग रहा है कि 50वें साल हमारे पिच पे हमारा टूर्नामेंट हो सकता है? मुझे पूरा विश्वास है कि जब हमारे गरवारे क्लब के 50 साल पूरे होंगे, हमारे लोगों का जो सपना है कि हमारे अपने ग्राउंड में हो, हमारा अपना ग्राउंड हो। बीच में हमने लोनावाला में उसकी तैयारी की थी, दुर्भाग्य से कुछ विघ्न संतोषी लोगों ने उसको फेल करने में पूरी मेहनत की और जो वो जगह 34 करोड़ में हमको मिल रही थी, वो बाद में 102 करोड़ में बिकी। हमारा बहुत नुकसान हुआ। पर जहाँ ऐसा है कि जहाँ अच्छे लोग होते हैं वहाँ बुरे लोग भी होते हैं, दुनिया का नियम है। जहाँ राम होते हैं वहाँ रावण भी होते हैं, जहाँ कृष्ण होते हैं वहाँ कंस भी होते हैं। तो इतना बड़ा क्लब है, उसमें 1-2 लोग ऐसे मिलते हैं जो खीर में नींबू डालने की कोशिश करते हैं। पर गरवारे क्लब के जो मेंबर्स हैं वो समझदार है, होशियार है, स्मार्ट है, वो उनको समझ गए हैं। आने वाले समय में हमारा अपना ग्राउंड हो, अपना मैदान हो, अपना स्टेडियम हो, अपना पेविलियन हो, वो सपना पूरा करने के लिए हम कर्तव्य सरकंप हैं। वी आर द विल टू हैव द कंप्लीट आवर ड्रीम। ऐसा हमारी पूरी इच्छा है। राज जी, आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए आइए अब सीधा मैच की तरफ रुख करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, आपसे प्रार्थना है विराजमान हो और मैच का मजा लें। सो लेट्स गो बैक लाइव फॉर द एक्शन। Balasinor Tigers have won the toss and they have invited Marco Polo Lions to bat first. The match goes live in a short while from now. Stay tuned. Thank you.
So good morning and welcome to Mahalakshmi Cricket Ground here at Western Railway Sports Association fluorescent green outfield, where you are going to witness GCH, that's Garwari Clubhouse presents Billmart GCH Cricket Super League Season 1. 6 teams, 1 dream, and the dream is to win this coveted inaugural tournament. So there will be 2 matches every day during the weekend, 2 matches today, 2 matches tomorrow, and we are thankful to all the team owners and the sponsors for this tournament. As we are about to start the live action, both the openers have arrived on the ground. Special thanks to Billmart, our title sponsor, JK & Company, apparel partner, Eagle Infra India Limited, cricket ball sponsor, Neo Designs, sponsors for CAP, Allied Digital, IT managed responsibly. They are our 4 sponsors. 6 is sponsored by Samir Pete, man of the match by Stainless Designer Studio. Cricket pad sleeves are sponsored by Beetle Leaf Company, and Sapient Leopards, team sponsored by Venture Catalyst Group. So match officials Mihir Thakkar and Sri Ram Krishnan are on the ground, as Sri Ram Krishnan will be at the bowler's end and Mihir Thakkar would be umpiring at the striker's end. Scorer for this match, Aroshi Tamse and Prajakta Desai, as we start the first over. And it will be from the pavilion end. Marco Polo Lions are owned by Ritesh Sukheja, and they have sponsors in India Gate and Ladu Samrat. On the other end, Balasinor Tigers are owned by Pratik Shah. So both the openers on the ground, wicket keeper standing well up to the stumps. A bit of warm-up exercises, and both the openers now taking their respective positions. A lot of enthusiasm building up. 5 on the off and 4 on the on. Hitesh Shah will bowl the first over. And straight away some spin. First delivery. Played nicely. Forward defensive push. Chandrash is the batter at the striker's end, and Ronak is at the non-striker's end. Nice costumes given to all the teams. This time played uppishly towards the widest extra cover, and they go for 2. So good start. An over pitch delivery, very easily picked on the off. Being the power play, you have a luxury to play your shots and score runs. Score 2 without loss. Hitesh Shah bowling the first over from pavilion end, and batter facing him is Chandrash. This time played down the ground. A confident looking shot and single. Both the batters are watchful. It's early winter here in Mumbai, and probably some moisture to negotiate. And we have a righty-lefty batting combo. Chandrash, the righty, and Ronak Sheth, the lefty, starting the innings for Marco Polo Lions. Marco Polo was an Italian businessman, come explorer, come writer. And the way Marco Polo explored Asia, I think Marco Polo Lions are going to explore the opportunities to score runs. Well, they are facing the might of Balasinor Tigers. Confident on drive.
Score 4 runs. Both the batters are looking forward to hit every single delivery that comes their way. There's a slip in place. Steps forward, and this time drives it in the gap, and there's a fielder there, but single. They say that you should use your feet against the spinners, and that's what precisely Chandras did. Score 5, Marco Polo Lions. They want a good start. Stump to stump and played with soft ends. Fielded very well at mid-off, and we come to the end of first over of the inaugural GCH presents Billmart GCH Cricket Super League 2022. Arish Mansoori to start the fresh over from the far end. He is a young captain, given captaincy at a very young age. I remember Nawab Mansoor Ali Khan Pataudi becoming Indian captain at the age of 21 years and 77 days. And of course, you catch them young, a young cricketer full of enthusiasm, zeal, and definitely a plan up his sleeve. He has also got some senior players who are going to support him. So that's how you grab the opportunity with both the hands, and Arish Mansoori, skipper, will be now bowling to Chandras. Chandras is on 4 of 4, Ronak is on 1 of 2. Score 5. Over number 2 from the far end. You can watch this telecast live on GCH YouTube channel. In case you have not subscribed, do subscribe, share the link or the GCH YouTube channel with your friends and near and dear ones. This time a beautiful delivery, nipping away from the right-hander, slightly short of length. Chandras wanted to go for a big heave, but missing it. Wearing jersey number 47, and definitely we would see some firecrackers from his bat, just like AK-47. Arish Mansoori. A gentle push and a single. Both the batters are still very watchful. They have not tried any big shots. They are just nudging and maneuvering the ball, playing it here and there, ensuring that they rotate the strike and keep the scoreboard moving. Beautiful graphics on GCH channel. Garware Clubhouse, established in 1974, marching towards Golden Jubilee in a couple of years from now. And this is a marquee event in the history of the club. First ever T20 tournament. It's a members only club situated in Churchgate at Wankhede Stadium. A grand inauguration ceremony happened a few minutes ago. This time ball swinging and playing through the line, finds a fielder, and there's no run. Ronak is playing on 1, Chandras on 5. No boundaries so far, no sixes so far, but very soon we will see it because it's a power play as young Arish Mansoori. There's a loud appeal, but this time probably missing the stumps. And score now 6. It's a 1 month long tournament, 18 matches, 6 teams. There will be 1 winner. Today we have 2 matches, and this is the first match where Balasinor Tigers won the toss, invited Marco Polo Lions to bat first. This time on the middle stump, and again driven
towards wideish mid-off. Chandrash is using his feet, which is a very good sign for Marco Polo Lions. Good footwork allows you to play shots with good timings, and good timing should allow you to place it well. There's a slip in place in this over as well. A spin and a medium pace combo to start with. This time there was a loud appeal, brilliantly picked up by wicketkeeper behind the stumps. Dinesh Patel is the wicketkeeper. So score at the end of 2 overs is 8 runs. 5 overs came off the first over and 3 runs came off Arish Mansoori's over, and it will be Hitesh who shall continue from the pavilion end. Arish Mansoori making some changes. It's a league tournament, but it's a super league. We see a lot of premier leagues happening all across India, but GCH believes in super cricket. In Hindi they say super se upar wala cricket, I would say, and that's why it's a super league. 8. Hitesh to continue. He will be bowling his second over. This time cross-batted shot and a single towards mid-on. 9. Chandrash is itching to go for that big shot, but not finding the gap till now. Slightly shortest in height. Ronak Sheth on the other hand has a very good height. If you look at the screen, he would remind you of Matthew Hayden. Firmly driven and a single. So score into double figures now. 10. Captain Arish Mansoori, the fielder. Orange color t-shirt and a black track pant for Balasinor Tigers. Oh, that ball, a nip backer, unexpected bounce. Chandrash could hardly connect. It took him by surprise, in fact. And that delivery has certainly given some encouragement to wicketkeeper Dinesh Patel to come forward and stay well up to the stumps. 10 without loss. That was on the middle stump, flicked away, finds a fielder at wideish fine leg, but a single. Score 11. Balasinor is a town in Gujarat in Mahisagar district, initially ruled by Nawab Babis. A lot of Gujarati families stay there, and there is a society also in Mumbai by that name, Balasinor Society in Kandivli. This time a wide ball, signaled by umpire Sri Ram Krishnan. I think the first extra, and score now 12. This time trying to pull that delivery, finds a fielder there at wideish square leg. Ronak also now showing some signs of aggression, and that's required because we are almost towards the last ball of the third over and they are yet to hit a boundary or a 6. But remember, it's a 20 overs game, so you might not want to hurry up the things. Take your time, settle down. Wide ball. So a total of 2 added to the tally. Not able to control the turn of the ball. Slightly
Slanted run up for Hitesh. Bowls from the edge of the crease, this time punching it off the back foot, but finds a fielder there. We come to the end of third over, score 16 without loss. 8 runs came off that over. Current run rate 5.33. These are the beautiful graphics. And all the sponsors displayed on your screen. Welcome to all the viewers who are watching this online from their home, from their offices. If you are traveling, maybe you have stepped out for a tea break from your office. Score is 16 at the end of 3 overs. Arish Mansoori to continue. Score 13. Mansoori into his second over. His first over went for just 3 runs. Hitesh on the other end, 2 overs, 13 runs and no wicket so far. Full toss ball and whack that delivery. That was a street smart cricket. A juicy half volley. And this will be Allied Digital 4. IT managed responsibly. Fantastic 4. It was in the making. A loosener ball to start with. A juicy full toss. And Ronak Sheth was waiting for it. And the floodgates are open. Score now sprinting to 20 without loss. Arish Mansoori will have to make a comeback. This time a wide delivery down the leg side. Picked up by Dinesh Patel. Being wicketkeeper is not an easy thing. It's a thankless job. The way your mother does a thankless job in house, in kitchen, wicketkeeper does the same thing. And Dinesh Patel will certainly have his work cut out with the tight line and length. Again a swinging delivery, driven nicely, and good running between the wicket. It was batter's call at the striker's end, and non-striker obliged. 22 without loss. Fourth over, Marco Polo Lions being invited to bat first by Balasinor Tigers. We have leopards and cheetahs and tigers and lions. This time plays up Pishley. There was a chance of catch out, but couldn't quite hold on to that catch. First aggressive shot. Chandras never wanted Arish Mansoori to settle down, especially after that 4 from Ronak. But there was a catch dropped. And a life for Chandras. Chandras dropped on 9, is now on 10 of 12. Ronak is on 10 of 10. Score 23. Marco Polo Lions, captained by Dilip Agarwal. Now coming in round the wicket. This time again a good drive, playing in V with his straight bat, and will get a single. 24. Marco Polo Lions have Bakul Mistry as vice captain, Dilip Agarwal as their captain. Balasinor Tigers on the other end have got Dinesh Patel, master. He's the vice captain, and Arish Mansoori is the captain. So right now captain and vice captain both in action for Balasinor Tigers. Dinesh Patel behind the stumps and Arish Mansoori in front of the stumps. 24. Swinging delivery again. Nice wrist position while delivering the ball. Arish Mansoori has certainly
learned the tricks of the trade at younger age, and stump to stump delivery. Score 25. Last ball of the fourth over. Both the batters are on 11 runs apiece. There's a wideish gully, a point, a short cover, and a mid-off. Again an over-pitch delivery. Very elegant looking cover drive. End of over number 4. Score is 26 without loss. Marco Polo Lions 26 at the end of 4 overs. Current run rate 6.5. Arish Mansoori 2 overs 13 runs. Ronak on 12 of 12. Chandrash on 11 of 13. And we may see a bowling change here. Another young gun. Well, the only intention behind this league is to groom the budding talent for the club, and club makes a big stride forward in terms of Mumbai cricket fraternity. GCH. There's also a snooker league that's going on, and Billmart GCH cricket Super League Season 1. So Hasdev will bowl the new over. A teenager, I guess, getting an opportunity to bowl. That's very good. That's how you will learn, gain experience. And he'll be bowling to Ronak, who has hit 1 boundary already in this innings. So dead ball, law number 20. When bowler started running but batter was not ready. Law number 20 says when the ball gets automatically dead and when umpire can give it a dead ball. So probably we'll discuss it later. That ball deviating away from the channel and collected neatly behind the stumps by Dinesh Patel. A loosener ball, 27. They say that wicketkeeper should gather the ball with open palms and soft hands. Dinesh has certainly saved a few extras behind the stumps, but controlling wide would be responsibility of bowlers. Another wide down the leg side, signaled by umpire Sriram Krishnan. Mumbai Cricket Association officials, Association of Cricket Umpires Mumbai, and the scorers are also official scorers, Association of Cricket Scorers and Statisticians. You can certainly make a career as a scorer, as an umpire, as a commentator, as a groundsman. Avenues are opened ever since IPL. 28. Round the wicket this time. Again the same result, wide. Probably Hasdev is trying to bring the ball into the left-hander, and that's a perfect line for a righty batter, but not for the lefty, because umpires have been pretty consistent when it comes to giving wide till now. 29. So wide, wide and wide, 3 wides in a row. 29. There was an appeal, and yes, he has given him. Finally, the nip backer does the trick, and Hasdev strikes gold. I may have bowled hat-trick wides, but I have got the premier batter out. Absolutely a ripper of a delivery. Pitching on the seam and curling into the left-hander. Very interesting action replay. Has caught him plumb. And he's given out. So Ronak departs on 12, and new man in is Shiten Kadakia. Looking at the sun,
And now gone in as a one down batter. So partnership of 29 runs ended. New man in is Shidin Kadakia, and now both the righty batters at the crease, and that should certainly give consistent opportunity for bowlers to bowl towards the one side of the stump. Shidin Kadakia taking guard from umpire, and now looking at the field placement, counting it. That's the technical way. That's how you are being taught by your coaches to count on the fielding positions. A slip, whitish gully, and then there is a deep cover, a short extra cover, and a mid off on the off. On the middle stump, and Shidin Kadakia using bottom hand starts with a single. Wearing jersey number 1, Shidin. Score now 30 for 1. Hasti was their go-to man who brought them joy. Now this time Chandra's losing his cool. He wanted to give it a whack, but then missing it completely, and that ball whistled past his bat. Swing and a miss. 30 for 1. We are in penalty mat over of the power play. Oz bamboozled him. Hastiv gives 2 early jolts, and Chandrash was never looking patient. He wanted to open an attack against Hastiv, but look at the rich dividends that he has reaped by bowling stump to stump. I am wearing jersey number 5 and I have made this match alive, is the message from Hastiv. Self out, took the inside edge and has bowled him. So new man in. Chandra's not looking happy. He worked really hard, got his eye in, but got out at the wrong time. But right time to take wickets. What a seesaw ride in this match. Young Hastiv bowling 3 back-to-back wides and then 2 wickets. हस्तीव सेंडिंग डाउन द सिग्नल, मैं आने वाले दिनों की बहुत बड़ी क्रिकेट की हस्ती बनने जा रहा हूं क्योंकि मेरा नाम है हस्तीव. So that's the message that he has given to all the other 5 teams in the fray. New man in is Nihar. A very tricky situation for both the new batters, Shiten and Nihar. Balasinor Tigers have started utilizing the conditions now. Still a very hot morning and the pitch will dry out. It's a tingy green surface, not much grass on it, but definitely a tinge of green. Nice elbow position and play towards silly mid-off. Fielded well by skipper.
End of over number 5, 30 for 2. Hasti 1 over, 4 runs and 2 wickets. 30 for 2, run rate 6 per over at the end of 5 overs. But you are watching Garwari Clubhouse presents Billmart GCH Cricket Super League 2022. Special thanks to our title sponsor, Billmart. Apparel sponsor, JK & Company. Cricket ball sponsored by Eagle Infra Industries Limited. Caps by Neo Designs. Fours by Light Digital. Sixes by Samir Pete. Man of the Match by Stainless Designer Studio. Cricket pad sleeves by Beetle Leaf Company. And special thanks to Venture Catalyst Group, who are the team sponsors for Sapient Leopards. So bowling change now. Devang to start from the far end. 5 overs, 30 runs and 2 wickets. Even he starts with a wide. Dinesh Patel diving to his left. There's a long run and finally they are able to stop the ball, but batters a bit slow in the reaction, and a wide given by umpire Mir Thakkar. It's never easy bowling your first delivery of the match, and that's the reason bowlers do a bit of practice with the mid-on or mid-off guy. That was wrapped on the pads. It will be interesting to see umpire signal. Yes, it is a leg bye. So another extra added to the tally. Score 34 for 2. We are in last over of power play. A beautiful delivery shaping into the right-hander, and Chitin Kadakia missed out completely. (34 for 2), 6th over. Over pitch delivery, driven with confidence towards Hasti, who was at short mid wicket. 35 for 2. Score 36 for 2. Over pitch delivery and driven brilliantly, but finds a fielder there in the circle. Both the batters are looking to pinch singles this morning. Good start for first wicket for 29 runs, but then 2 wickets in quick succession in the previous over have dented the run rate considerably. Over pitch delivery, and this time Shiten goes for a big heave, and there's a chance of catch out, but again a catch dropped. It's not easy going backwards and take the catch. Shiten will accumulate 2 runs. Shiten knew exactly that this is the last over of the power play and I must attack. He might not have got boundary, but has certainly got 2 runs. 39 for 2, only 1 boundary in this innings so far by Ronak Sheth, and no sixes. Played on the onside for a single.
So end of power play. 2 wickets have fallen in power play. Balasinor Tigers looking happy with the work that they have done in power play. They have got 2 openers out. Ronak Sheth and Chandrash are the 2 batters who got out. Shiten not out on 5 of 5. Nihar not out on 1 of 3. Devang 40 for 2 at the end of 6 overs. नया ओवर प्रारंभ करेंगे हसदेव. बहुत ही बढ़िया मिडल स्टंप पर आती हुई गेंद बैकफुट पर जाकर उसे पुश किया विकेटों के सामने. शितेन कड़ाकिया ने. पावर प्ले के ओवर समाप्त हुए हैं और इसलिए क्षेत्र रक्षण फैला दिया गया है. आज इस प्रतियोगिता का उद्घाटन हुआ. वाइस प्रेसिडेंट उपाध्यक्ष राज के पुरोहित साहब हमारे साथ हैं. और इसके अलावा मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के एपेक्स काउंसिल के मेंबर्स, जीसीएच कमेटी मेंबर्स, जीसीएच क्रिकेट कमेटी मेंबर्स ये उपस्थित थे और बहुत ही जोश के साथ इस प्रतियोगिता का आगाज हुआ. ओवर पिच बॉल ड्राइव कर दिया यहाँ पर निहार ने. 1 रन पूरा करते हुए. रंग बिरंगी कपड़ों का क्रिकेट 1977 में कैरी पैकर ने इसे लाया. पैकर सर्कस के जरिए चैनल 9 पर जब रिबेल क्रिकेट की शुरुआत हुई और उसे तब नाम दिया गया था पायजामा क्रिकेट. बैकफुट पर जाकर अच्छी प्लेसमेंट रही है. यहां पर कम से कम 1 रन पूरा करेंगे. दूसरे की दौड़ लगा चुके हैं, वहां पर देखना होगा. दो रन दौड़कर पूरा करते हुए शितेन खड़ा किया. और यही सही क्रिकेट है, 1 को 2, 2 को 3 में तब्दील करते रहना. 44 for 2, 44 पे 2. हसदेव अपना दूसरा और पारी का 7वां ओवर शुरू कर चुके हैं WRSA पेविलियन छोर से. ओवर पिच बॉल ड्राइव किया लेकिन वहां पर क्षेत्र रक्षक मौजूद. विकी जिन्होंने गेंद को रोका. और नो बॉल और फ्री हिट. पहला फ्री हिट इस पारी का. हस्तीव एक युवा गेंदबाज है और हर मैच के साथ, हर गेंद के साथ वो सीखेंगे. थोड़ा सा उनके रनअप में परेशानी रही और फ्री हिट बॉल. 46 पे 2. कदमों का अच्छा इस्तेमाल, उठा दिया है और जी हां ये लगा अलाइड डिजिटल चौका. अलाइड डिजिटल चौका नंबर 2 और ये पहला चौका निहार के बल्ले से आता हुआ शानदार शॉट. स्कोर हो गया है 50 और मार्को पोलो लायंस की बल्लेबाजी हो रही है झकास. 7वां ओवर. इस बार बेहतर बॉल थी. देखिए जब आप विकेटों में गेंदों को करते हैं तो आप अतिरिक्त रन नहीं देते. इस बात को अच्छे से समझा. ओवर समाप्त होते हुए 7. स्कोर है 50 2 विकेटों के नुकसान पर. शितेन 8 बॉल 9, निहार 8 बॉल 6, हस्तीव 2 ओवर 14 रन 2 विकेट. हस्तीव के इस ओवर में 10 रन आए. जिस हिसाब से बल्लेबाजी चल रही है 150 का करिश्माई नंबर, मेरे ख्याल से पहला मील का पत्थर 150 का होना चाहिए और दूसरा मील का पत्थर यानी कि माइलस्टोन 170 का रखना चाहेंगे.
नया ओवर करेंगे अब देवांग, अपना दूसरा और पारी का 8वां ओवर। आज भारतीय टीम के राजा विराट कोहली का जन्मदिन है और गरवारे क्लब हाउस, मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन और तमाम हिंदुस्तान की जनता की ओर से विराट कोहली को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। इस बार ओवर पिच बॉल दी शितिन कड़ाकिया का, ये गलत शॉट था और कड़ाकिया आउट होते हुए ओवर पिच बॉल थी जिस पर कवर ड्राइव लगाना चाहते थे शितिन कड़ाकिया। बॉल हवा में रही और एक दर्शनीय कैच वहां पर आर्यन ने कैच लिया और तीसरे विकेट का पतन। काफी समय बॉल हवा में रही और अपने छाती के करीब आते हुए कैच का स्वागत, मुट्ठियां बंद करके खुशी का इजहार, और बल्लेबाज शितिन कड़ाकिया मैदान के बाहर। 9 रन बनाकर 50 पे 3। एक अच्छी चीज हम देख रहे हैं कि नियमित अंतराल पर विकेटें गिर रही है। पहली 2 विकेटें पवेलियन छोर से गेंदबाजी करते समय हमने देखी थी। ये पहला विकेट है जो दूर वाले छोर से मिला है और नए बैटर है राहुल, सन हैट पहनकर मैदान में उतरते हुए। सन हैट का भी एक अनन्य साधारण महत्व है क्रिकेट में। आमतौर पर टोपी पहनी जाती है जिसको कैप कहा जाता है, लेकिन कुछ खिलाड़ी हैट पहनना ज़्यादा पसंद करते हैं, खास करके वेस्ट इंडीज़ के रिची रिचर्डसन कहिए, कार्ल हूपर, कीथ आथरटन जैसे खिलाड़ी जो सन हैट पहनकर अपना क्रिकेट खेले। मिताली राज भारत की, आपने हमेशा उनको सन हैट में देखा। शेन वॉन, उन्होंने बैगी ग्रीन बहुत कम पहनी, सन हैट पहनकर खेला करते थे। फिफ्टी फॉर 3, 8th ओवर। इस बार बेहतर बॉल थी, बल्ला और पैड साथ में रखा और धकेला विकेटों के सामने 1 रन के लिए। राहुल महाजन चाहेंगे कि अब थोड़ा साथ निभाया जाए निहार का। 20-20 ओवर का मुकाबला है। मार्को पोलो लायंस को बल्लेबाजी का न्योता आज दिया गया बालासिनोर टाइगर्स द्वारा, जिन्होंने टॉस जीता। क्रीज के कोने से इस बार बॉल काफी समय हवा में रही थी, ओवर पिच बॉल थी, बल्ले की जड़ से लगी और 2 रन पूरा करते हुए वहां पर निहार। तिरपन रन 3 विकेटों के नुकसान पर। हस्तीव और देवांग ये कामयाब गेंदबाज रहे हैं। ये पिच मेरे ख्याल से बल्लेबाजी गेंदबाजी दोनों के लिए मुफीद है। आठ ओवर 53 रन 3 विकेट। इस ओवर में शितिन कड़ाकिया का विकेट गिरा, जिनको आर्यन ने कैच आउट किया था जब वो कवर ड्राइव लगाने की कोशिश कर रहे थे, और वो विकेट अहम रहा था। 8 ओवर 53 रन 3 विकेट। आप देख रहे हैं GCH प्रेजेंट्स बिलमार्ट GCH क्रिकेट सुपर लीग सीजन 1। गेंदबाजी में अब नए ओवर प्रारंभ करेंगे।
बॉलर है सलील बाबर देसाई। जर्सी नंबर 10 पहनी है। ये वो नंबर है जो कोई तारुफ का मोहताज नहीं है। पेले से लेके माराडोना से लेके क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर ने ये जर्सी पहनी। गेंदबाजी करेंगे राहुल को। निहार 11 बॉल 8, राहुल 2 बॉल 1। इस पारी के 5वें गेंदबाज के रूप में हम देख रहे हैं सलील बाबर देसाई। छोटे छोटे स्पेल्स में गेंदबाजों का इस्तेमाल किया जा रहा है। टीम मैनेजमेंट पूरी तरह से संतुष्ट है अब तक के प्रदर्शन से। आरिश मंसूरी ने टीम को बहुत अच्छा यहां पर संभाला है। पहली गेंद बल्ला और पैड साथ में रखा, पुश किया, सिली पॉइंट तक जाना पड़ा था विकेट कीपर दिनेश पटेल को। 54 फॉर 3, 54 पे 3। ज्यादा टर्न नहीं था, बड़े आसानी से बैकफुट पर जाकर पंच कर दिया और जी हाँ ये लगा एलाइट डिजिटल चौका। बहुत ही लाजवाब बैकफुट कवर ड्राइव। सर डॉन ब्रैडमैन ने कहा है कि अच्छा बल्लेबाज वही होता है जो बैकफुट पर अच्छा खेले, और ये जो स्ट्रोक था, निहार ने गेंद को निहारा, शॉट के लिए जगह बनाई और गैप से खेल दिया। लाजवाब चौका, एलाइड डिजिटल 4। 58 पर 3। निहार पहुंचे 12 पर। 1 दर्जन रन निहार के नाम। लाइन बदली और वाइड बॉल। 59 फॉर 3, 9th ओवर। बेहतरीन गेंद, कमर के बल झुककर एहतराम के साथ खेला उसे। इस बार शॉर्टर वाइड बॉल थी, बैकफुट पे जाकर पंच लगा दिया। एक और बेहतरीन शॉट, WRSA के मखमली घास पर कलाबाजी लगाते हुए उस गेंद को रोका था युवा हस्ती ने और चौका बचाया। शाबाशी हासिल की अपने टीम के अन्य सदस्यों द्वारा। ये बहुत ज़रूरी होता है, प्लेयर्स शुड कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, और वही वहाँ पर देखने मिला। बहुत अच्छी सकारात्मक सोच। स्कोर 61 पर 3, 9वां ओवर। सलील बाबर देसाई चश्मा पहनकर गेंदबाजी करते हुए। इस बार स्क्वायर ऑफ द विकेट 1 रन हासिल किया। निहार और राहुल, ये दोनों के लिए मंत्र यही रहेगा कि समय समय पर स्ट्राइक बदले। 9 ओवर 62 रन 3 विकेट। 9 ओवर्स 62 फॉर 3। GCH के YouTube चैनल पर हमारे तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आप अपने स्मार्टफोन पर, लैपटॉप पर, डेस्कटॉप पर, आईपैड पर, आईफोन पर, जहाँ कहीं भी आपने घर के टीवी से कनेक्ट करके देख रहे हैं तो आपका स्वागत। आशा करते हैं कि दिवाली आपके लिए अच्छी रही होगी। दिवाली की मिठाई और नमकीन का मज़ा आपने लिया, और अब क्रिकेट के पटाखे आज से फूटेंगे। GCH क्रिकेट सुपर लीग में सलील बाबर देसाई 1 ओवर 9 रन, निहार 16 बॉल 15, राहुल 3 गेंदों में 2, और नया ओवर अब विक्रांत रामभिया। पश्चिम अंचल के लिए उन्होंने यूनिवर्सिटी क्रिकेट खेला है।
वो अनुभव तजुर्बा ज़रूर उनके काम में आएगा। और आज के दिन का पहला लेफ्टी बॉलर, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिन। भारत ने कई ऐसे लेफ्ट आर्म स्पिनर्स दिए। कदमों का अच्छा इस्तेमाल और यहां पर ड्राइव कर दिया निहार ने, 1 रन। हितेश शाह ने बॉलिंग का प्रारंभ किया था स्पिन अटैक से, और अब लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिन विक्रांत राम्बिया, विकी के नाम से विख्यात है, 63 for 3। इस बार शॉट के लिए जगह बनाई और खेला है विकेटों के सामने, 1 रन और स्कोर आगे बढ़ता हुआ 64, 3 विकेट के नुकसान पर 64 for 3। बिशन सिंह बेदी से लेके सुनील जोशी से लेके दिलीप दोशी से लेके रघुराम भट्ट से लेके पद्माकर शिवलकर, विनू मांकड़ साहब, प्रज्ञान ओझा, वेंकटपति राजू, राहुल संघवी, कई नाम आप ले सकते हैं लेफ्ट आर्म स्पिन गेंदबाजों की फहरिस्त में। कुलदीप यादव, इस बार चीकी सिंगल, थोड़ा जोखिम जरूर था और रन आउट। अब थोड़ा सा सुस्ती यहां पर महंगी पड़ती हुई और ये विकेट का पतन। अब ये तो बिल्कुल अपेक्षित नहीं था, बैकफुट पर जाकर खेला, बहुत अच्छा गेंद को गैदर किया, एक ही एक्शन में थ्रो, और वहां पर कोई गलती नहीं की विक्रांत राम्बिया ने। आउट होकर वापस लौटना पड़ेगा निहार को। पारी के सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज निहार को अब 16 पर लौटना होगा रनआउट के रूप में। एक और भागीदारी यहां पर टूटती हुई, मार्को पोलो लायंस के बल्लेबाज एक के बाद एक आउट होते जा रहे हैं। पहले रौनक शेठ, बाद में चंद्राश, फिर शितेन कड़ाकिया और अब निहार। जलपान का अल्प विराम, थोड़ा सा मायूस होकर देखिए, कंधे झुके हुए हैं निहार के। नए बल्लेबाज है दिलीप अग्रवाल, टीम के कप्तान। सत्ताईस नंबर की जर्सी पहनी है। देखिए, हर जर्सी के ऊपर नंबर है, उसका अनन्य साधारण महत्व है, और उसमें एक यूनिक नंबर है मुंबई के सरफराज खान का, जो 97 नंबर पहनते हैं। वो इसलिए क्योंकि हिंदी में उसका मतलब है 97, जो उनके पिता है नौशाद, उसके साथ मिलता जुलता है 97। इस बार बैकफुट पर जाकर खेला, 1 रन पूरा किया है। वहां पर जोखिम कारक रन था, लेकिन आखिरकार जोखिम लेना पड़ेगा। ओवर यहां पर खत्म होता हुआ विक्रांत राम्बिया का, और 10 ओवर की समाप्ति पर 65 रन, 4 विकेट। So at the halfway stage, 65 for 4. Welcome everyone. You are watching GCH presents Billmart GCH Cricket Super League Season 1. Billmart, that's it. We had Gautam Shah representing Billmart this morning, the title sponsors. Vikrant gave away 3 runs in his first over. As we start the new over, Salil Babar Desai to continue, and single on the onside, 66 for 4. Score that looked around 150 at one stage may well get folded between 130 to 135. 4 good batters are out, but right now Dilip Agarwal, who has also played at a very high level cricket, facing
Beautiful stance. You got to have a good stance, and these are things that you would learn as a child when you go to the nets for cricket coaching in vacation or maybe through a regular coaching. Babar Desai flighting this time. Beautiful flight. This time he whacked it, and this will be interesting to see. Allied Digital 4. IT managed responsibly and Dilip Agarwal played responsibly. Bending on his knees, technically correct shot. 70 for 4. Dilip Agarwal knows the importance of his wicket as a skipper. 70 for 4. There's an appeal this time, and Salil Babar Desai not looking happy, but probably the batter was slightly forward, and end of over number 11, 70 for 4. Rahul on 5 of 6, Dilip Agarwal on 4 of 5, Salil Babar Desai 2 overs and 14 runs. Vikrant Rambia to continue from the far end. So our pavilion is situated towards the lower Parel station, and far end is situated towards Mahalakshmi railway station. The goddess Mahalakshmi blessing Mumbaikars. This time goes on the back foot and punches it neatly. They go for 2. Rahul realizing the importance of double runs. 72 for 4. 12th over. This time a flighted delivery, almost a shin grubber height, and played towards the offside. So it's a double spin attack from pavilion end Salil Babar Desai, and from the far end Vikrant Rambia. 73 for 4. Over number 12. Another flighted delivery, tossing it up, and Rahul wanted second run, but Dilip sent him back. Dilip Agarwal doesn't want to hurry. Last wicket that they saw was by way of a run out, and Agarwal knows that hurry, worry and curry can invite trouble. 74 for 4. A good partnership is required between these two in the middle order. Tossing it up, this time a straight drive. What a clinical timing that was, but finally stopped in front of the side screen for a single. 75 for 4. What an important number, 75. This is the 75th year of our Indian independence. Oh, what a delivery. Almost unplayable. Rahul on 9 of 9. Dilip Agarwal on 5 of 7 with the help of one Allied Digital 4. End of over number 12, 75 for 4.
Vikrant Rambia, 2 overs, 8 runs and no wickets. So 4 Allied Digital boundaries during the tenure of 12 overs. That's 1 boundary every 3 overs. Salil Babar Desai to continue. The pitch has dried out now. Bright sunshine. Pleasant weather towards the early mornings and late nights here in Mumbai, the city of dreams, blessed by Mumba Devi. 75 for 4. Again in the channel and worked on the onside. Projected score may well be around 130. Over pitch ball, that was a golf shot, but got a good elevation but not the distance. Single. $77 runs for the loss of 4 wickets. 13th over in progress. That was a long hop and punched towards a deep cover. Hastiv the fielder. Hastiv has been a busy man in deep cover today. 78 for 4. 13th over. This time a beautiful square cut, piercing the gap between the fielders, and that will sprint to the fans for Allied Digital 4. IT managed responsibly. 5th 4 of the innings. A long hop and made a room for himself. Dilip Agarwal is playing his shot so well. His first boundary came on the onside, second on the offside. 82 for 4. Again slapping that ball past the extra cover will get a single. That's the correct way of doing batting. After you hit a 4 and 6, you take a single and rotate the strike. So 13 overs, 83 for 4. Both the batters on 11 runs each. You are watching GCH presents Billmart GCH Super Cricket League 2022. This is the first season, and we are thankful to our title sponsors, Billmart, apparel sponsors JK & Company, cricket ball sponsored by Eagle Infra India Limited, caps by Neo Designs, 4s by Light Digital, 6s by Samir Pete, man of the match by Stainless Designer Studio. We are thankful to Beetle Leaf Company for sponsoring cricket pad sleeves, and Venture Catalyst Group, who are the team sponsor for Sapient Leopards. Balasinor Tigers are owned by Pratik Shah. On the other end, Marco Polo Lions are owned by Ritesh Sukhija, and their sponsors are India Gate and Ladu Samrat. Vikrant Rambia into his 3rd over. Vikrant Rambia is definitely studying the body language of the batter. Both Dilip and Vikrant have played at a highest level in Mumbai, and that's how they could be the fierce competitors to each other. This time Dilip working
on the offside. And that is what you would love to see in cricket, strength to strength. You would want to do the SWOT analysis, the strength, weaknesses, opportunities and threats. That makes you a great unit as a team and individual cricketer. 84 for 4. Tossed it up and bowled him. That was a delivery. That was certainly a magic ball. And wicket number 5 gone. Dilip Agarwal was wanting to go for a big shot because the previous ball was a dot ball, and that's where Vikrant Rambia had a trap ready for Dilip Agarwal and a cross-butted shot, and he gave away his middle stump to the bowler. 5th wicket gone. $84 for 5. New man in is Vishal Shah, known as Lala. He's wearing jersey number 18, the number that is wore by the birthday boy Virat Kohli. $84 for 5. First success for Vikrant Rambia. That should motivate him. Bowls from the edge of the crease. Another appeal, ball keeping low. Dinesh Patel jumping in joy, but 84 for 5. It's the first weekend of November month, and you're watching this beautiful tournament. Again, appeal and given. LBW Vishal gets out. Vikrant Rambia gets another success. Bowling stump to stump. And batter Vishal had no clue whatsoever. And Balasinor Tigers are roaring and roaring like tigers. 6th wicket gone. Let's look at that. Beautiful turn. Straightening after pitching. Batter went for the turn and ball straightened a touch and caught in front of the stumps. New man in is Bakul Mistry, known as BM. Well, there is a saying that top 5 are batters and last 6 are run getters. Last 6 will have to contribute. Of course, now last 5 will have to contribute. Rahul is still there on 11. Bakul has just arrived wearing jersey number 7. Arish Mansoori definitely is working on a plan. He wants Vikrant to bowl all his overs on a trot. This is his 3rd over in succession, and well, Hasdev got 2 wickets in 1 over, and so is Vikrant. Last ball of the 14th over, and I'm sure Balasinor Tigers would want to finish this before 20th over. End of over number 14, 84 for 6. Current run rate 6 per over. Vikrant 3 overs, 9 runs and 2 wickets.
84 for 6 as Salil Babar Desai will be bowling his last over. Has bowled in tandem, 22 runs conceded in 3 overs. Over pitch ball, and Rahul wanted to go for a big shot this time. And I think this will be Allied Digital 4. Misfielded. There was a chance to stop that ball. Over pitch ball and a golf shot displayed by Rahul. And that ball landed towards the right side of the fielder and then slowly made his way for Allied Digital 4. 6th boundary of the innings. Score 88 for 6. Straight delivery on the off stump, and they would convert it for 2. Yes, they would want to go for every single run from here on. Capitalizing on the opportunity, that's what you got to do. 88 for 6. Salil Babar Desai into his last over. Over number 15 of the innings. This time a power-packed punch, but again a fielder is stationed there. Hasteev the fielder. Hasteev is patrolling at deep covers like a black cat commando and has not allowed any ball to go past him. Has got a mature head on young shoulders. Hasteev already made a name for himself by giving jolts to Marco Polo Lions when he claimed 2 wickets in 1 over, and now end of over number 15. 91 for 6. पंद्रह ओवर का खेल समाप्त हुआ है. 91 रन बने हैं 6 विकेटों के नुकसान पर. राहुल खेल रहे हैं 17 पर, 17 गेंदों का सामना किया है. बकुल मिस्त्री खेल रहे हैं 1 रन पर, 2 गेंदों का सामना किया है. सलील बाबर देसाई 24 गेंदों में 29 रन दिए, कोई विकेट हासिल नहीं किया है. विक्रांत रामबिया अपना आखिरी ओवर अब प्रारंभ करेंगे दूर वाले छोर से. साउथ मुंबई, दक्षिण मुंबई में स्थित ये मैदान. नए ओवर की शुरुआत फ्लाइट दी थी इस बार. अंग्रेजी में जिसको डोंकी ड्रॉप फ्लाइट्स कहा जाता है. एक ऐसी ऊंचाई से गेंद हवा में तैर के आती है जैसे पानी में मानो मछली तैर रही हो. इस बार स्ट्रोक के लिए जगह बनाई, बैकफुट पर जाकर खेल दिया है. देखना होगा, अब जाकर उसे रोका गया है, लेकिन महज 1 रन. राहुल ने कड़ी मेहनत की है, शिद्दत के साथ खेला है इस पारी में, और मार्को पोलो लायंस चाहेंगे कि राहुल अंतिम ओवर तक नाबाद रहे और ये स्कोर को एक सम्मानजनक स्थिति तक पहुंचाए. इस बार बैकफुट पर जाकर खेला है. 1 रन हमेशा ही था राहुल के लिए. छह विकेट के नुकसान पर 93 रन. 93 for 6.
विक्रांत रामबिया को जब दौड़ते हुए देखते तो राहुल संघवी की याद आती है। बहुत ज़्यादा फ्लाइट दिया था इस बार, लेकिन चकमा खाया। देखना होगा बल्ले से लगी अथवा नहीं, शायद बाई हो सकती है। जी हाँ, बाई का इशारा मीर ठक्कर हमारे अंपायर द्वारा। 94 पर 6। अपने से दूर धकेला और 1 रन। 16 ओवर 95 रन 6 विकेट। 95 for 6 at the end of 16। विक्रांत रामबिया 4 ओवर 12 रन 2 विकेट। काफ़ी कंजूस गेंदबाजी रही है विक्रांत की, कम खर्चा फुल चर्चा ऐसी गेंदबाजी कही जाएगी विक्रांत की। लेकिन दूसरी तरफ राहुल मार्को पोलो लायन का वो शेर जो दहाड़ रहा है 19 गेंदों में 19 बनाकर। एक ईशान अब नया ओवर। ईशान अब गेंदबाजी करेंगे राहुल को। आखिरी 4 ओवर का खेल शेष। नए ओवर की पहली गेंद काफ़ी अच्छी ऊंचाई से गेंदें आ रही है। बालासिनोर टाइगर्स ने टॉस जीतकर मार्को पोलो लायंस को बल्लेबाजी के लिए बुलाया था। ओवर पिच गेंद और गेंद की लाइन में आकर ड्राइव किया था। यहाँ पर राहुल ने 1 रन पूरा किया, दूसरे की दौड़ लगा चुके। यहाँ पर बकुल मिस्त्री की तारीफ करना चाहूंगा। बकुल ने अपने पार्टनर के रनों को अहमियत दी और वहीं पर 2 रन संभव हो पाए। 100 की तरफ अग्रेसर होते हुए अब मार्को पोलो लायंस 97 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। इस बार करारा प्रहार गेंद के ऊपर। 6 विकेट पर 98 रन। 98 for 6। आप देख रहे हैं GCH प्रेजेंट्स बिलमार्ट GCH क्रिकेट सुपर लीग सीजन 1 2022 के अंतिम महीनों में, नवंबर दिसंबर जो आखिरी 2 महीने होते हैं उसमें यह प्रतियोगिता खेली जाएगी। हर शनिवार रविवार को 2-2 मैचेस, 6 टीमें, 1 विजेता और कई सारे इनाम से नवाजा जाएगा खिलाड़ियों को इस प्रतियोगिता के दौरान। 99 पर 6 ईशान और 100वां रन बल्ले से बनता हुआ यहाँ पर 17 ओवर में ये 100 रन बने। ईशान ने अपना पहला ओवर पूरा किया। 100 पे 6, करंट रन रेट 5.88 और किसी भी कीमत पर जो स्कोर 150 तक दिख रहा था वो 130-135 पे दबा और अब अगर इसको 120 के अंदर दबाने में कामयाब होते हैं टाइगर्स तो मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छी वापसी कही जाएगी। राहुल का विकेट बेशकीमती है यहाँ पर और गेंदबाजी में अब एक और तब्दीली।
आरिश मंसूरी अब नया ओवर प्रारंभ करेंगे। आरिश मंसूरी पावर प्ले में गेंदबाजी के लिए आए थे। आरिश ने अपने बॉलरों पर भरोसा दिखाया। कोई भी गेंदबाज का छोर उन्होंने बदला नहीं है। जिस गेंदबाज को जो छोर दिया वहीं से उसको कायम रखा है। वो सातत्यता, निरंतरता आज देखने मिली है। इस बार नए ओवर की पहली गेंद मिडल स्टंप पर आती हुई ड्राइव किया, 1 रन, 101 पर 6। इस बार थोड़ा अपिश खेला था, हालांकि गेंद रोक नहीं पाए और उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। 2 रन पूरा करने जा रहे हैं वहां पर बकुल मिस्त्री। बकुल की भी तारीफ करनी होगी। एक ही चीज कह सकते हैं, बकुल जिसने रखा है अपना दिमाग ठंडा ठंडा, कूल कूल, वो है बकुल। 103 पर 6, बहुत अच्छी पारी खेलते हुए बकुल। 8 बॉल 5। इस बार बॉटम एंड का इस्तेमाल किया और 1 रन लिया। ये बहुत ज़रूरी है कि अब बची हुई गेंदों में कोई बिंदी गेंद न खेलें। 120 का जो पहला मील का पत्थर है, अब वो तो हासिल करना ही होगा, क्योंकि अगर इतने बड़े मैदान में आपको जवाबी हमला करना है दूसरी पारी में, तो 120 रन की दौलत चाहिए। इस बार टप्पा खाकर बाहर की जानिब मुड़ी गेंद और दिनेश पटेल ने अपने दस्तानों में कैद किया विकेटों के पीछे। 104, 6 विकेट के नुकसान पर। समय के मामले में भी देखिए आरिश मंसूरी अब थोड़ा जल्दबाजी कर रहे हैं मिनटों को बचाने के लिए। 90 मिनटों में जो ओवर करने हैं। इस बार बेहतरीन गेंद, होशो हवास उड़ाते हुए राहुल जैसे मजे हुए बल्लेबाज को परेशानी दी थी आरिश मंसूरी ने। 104, 6 विकेट पर। इस बार कद्दावर शॉट था, बॉलर के सर के ऊपर से ड्रिल किया, साइड स्क्रीन के सामने। 1 रन, 105, 6 विकेट के नुकसान पर। 18 ओवर समाप्त। आरिश मंसूरी 3 ओवर 18 रन, कोई विकेट नहीं। राहुल 28 गेंदों में 25, बकुल 9 गेंदों में 6। वेस्टर्न रेलवे स्पोर्ट्स एसोसिएशन के मैदान पर आज इस प्रतियोगिता का प्रारंभ हुआ है। 19वां ओवर करेंगे ईशान। आरिश मंसूरी के पास भी 1 ओवर अभी बचा है। ईशान को उन्होंने आजमाया है। टप्पा खाते ही वहां पर हरकत ली, हरकत में ही बरकत है, लेकिन वहां पर बरकत नहीं मिलेगी और आउट होकर वापस लौट गए वहां बैटर राहुल। ईशान वहां विकेट लेने में कामयाब रहे और 7वें विकेट का पतन। राहुल 25 पर आउट हुए। योगायोग की बात यह है कि उनका जर्सी नंबर भी 25 है और रन भी उन्होंने 25 बनाए। बहुत बढ़िया कैच। देवांग ने कैच लिया। ये नंबरों का गेम है और 25 नंबर का जर्सी और 25 रन उन्होंने बनाए और उनका विकेट भी लिया 25 नंबर के जर्सी पहने हुए खिलाड़ी ने। वाओ, व्हाट अ कोइंसिडेंस। 25, 25, 25। नए बैटर है कमलेश। इस बार ड्राइव किया कमलेश ने, 1 रन लिया। 106, 7 विकेट के नुकसान पर। देखिए ईशान को गेंदबाजी में बुलाने का जो दांव खेला था कामयाब रहा।
आड़े बल्ले से खेल दिया, बल्ले को स्वाइप किया है मानो स्क्वायर लेग की जानिब, देखना होगा ये लगा हाईलाइट डिजिटल चौका, अफलातुन टाइमिंग, टप्पा खाते ही बल्ले को घुमाया और अलाइट डिजिटल चौका बनाया। 110 7 विकेट पर। 110 पर 7। ईशान जिसकी गेंद पर बकुल मिस्त्री ने छोड़े अपने बल्ले से निशान। 110 पर 7। इस बार फिर से बल्ले को स्वाइप किया है बकुल मिस्त्री, एक बहुत ही उम्दा पारी खेल रहे हैं। जीवन में हर एक फ्रेंड जरूरी होता है, वैसे क्रिकेट मैच में हर एक रन भी जरूरी होता है। 11 पर पहुंचे बकुल, स्कोर 111 पर 7। 19वां ओवर ईशान द्वारा। इस बार बेहतरीन शॉट खेला है, देखना होगा गेंद वहां पर मैदान के बाहर नहीं जा पाएगी। 8वें विकेट का पतन। बकुल मिस्त्री अपना पार्टनर खोते हुए कमलेश के रूप में देवांग के हाथ में आता हुआ एक और कैच। अपने घुटनों पर बैठकर बैठक शॉट जिसको मुंबईया भाषा में कहा जाता है वो खेला था। इस पूरे मैच में एक भी 6 हमें देखने नहीं मिला है। समीर पेठे 6 का इंतजार, और अब नए बैटर हैं अब है डिकी मोदी। ये मैच में विक्रांत उर्फ विकी को भी हमने देखा, और अब देख रहे हैं डिकी। डिकी नाम आते ही हमारे कमेंटेटर भाई डिकी रत्नाकर साहब की याद ताज़ा होती हुई, एक ऐसी मखमली आवाज़ जिन्होंने ऑल इंडिया रेडियो की सेवा की। अनंत सेतलवाड़, सुरेश सरैया, डिकी रत्नाकर, आज हमारे ये सीनियर क्रिकेट कमेंटेटर्स जिन्होंने अंग्रेज़ी में आपका कई साल मनोरंजन किया, अनंत सेतलवाड़, ये सभी की याद ताज़ा होती हुई। बॉबी तालियार खान साहब, इनको हम कैसे भूल सकते हैं। 19 ओवर की समाप्ति पर 111, 8 विकेट के नुकसान पर। बकुल 11, डिकी 0, ईशान 2 ओवर 11 रन 2 विकेट। मार्को पोलो लाइन्स के लिए एक अच्छी बात है कि वो ऑल आउट नहीं हुए हैं। बची हुई 6 गेंदों में अगर वो 9 रन भी बनाते हैं तो बराबर 120 बनेंगे 120 गेंदों के। जैसा हमने बताया, ईशान 25 नंबर की जर्सी, उन्होंने 25 रन बनाए हुए 25 नंबर की जर्सी के टी शर्ट पहने हुए राहुल को आउट किया। कई बार ये आंकड़े जो है याद रह जाते हैं। ऐसी एक आंकड़ों की करामत हम डिस्कस करेंगे। आरिश मंसूरी, आखिरी ओवर की पहली गेंद। जी हाँ दोस्तों, इंग्लैंड के एक विकेट कीपर कम कैप्टन थे एलेक्स स्टुअर्ट। उनकी जन्म तारीख थी 8 अप्रैल 1963, 8/4/63, और जब वो रिटायर हुए तो टेस्ट क्रिकेट में उनके रन भी थे 8463। इस बार खेला है, फ्लिक किया, विकेटों के पीछे 1 रन पूरा किया। बकुल दूसरा रन लेने में कामयाब रहेंगे, शायद तीसरे की दौड़ लगाना चाहते थे, वहां पर तीसरे की दौड़ लगा चुके हैं। वहां पर बहुत अच्छा रनिंग बिटवीन द विकेट कहा जाएगा। डिकी अभी अभी आए हैं, उनके पैरों में वो जान है, पैर थके नहीं है, ताजगी है, और बकुल मिस्त्री के 3 रन को पूरा करने में उन्होंने सहयोग दिया। यही बड़ी बात होती है, सबसे बड़ा योग कि दोनों बल्लेबाज रन बनाने में एक दूसरे को करें सहयोग। 114 पर 8, 20वां ओवर, किसी भी कीमत पर 120 चाहिए, और फिर मार्को पोलो लायंस के जो गेंदबाज हैं उनके ऊपर दारोमदार रहेगा। आगे आकर खेलने का प्रयास। 114 पर 8। आरिश मंसूरी को विकेट नहीं मिला है, लेकिन उनका इकोनॉमी रेट भी अच्छा रहा है। ये ओवर शुरू होने से पहले 18 गेंदों में 18 रन दिए थे,
और अगर वो 24 गेंदें ख़त्म करके 24 रन देते भी हैं तो मेरे ख्याल से एक अच्छी बॉलिंग कही जाएगी। इस बार लोअर फुल टॉस का ड्राइव कर दिया है, वहां पर एक बार फिर से हस्तीव ने आज मस्ती में अपना क्रिकेट खेला है, अपने आप को व्यस्त रखा है, मस्त रखा है हस्तीव ने। 115 पर 8। सबसे बड़ी बात है खेल को एंजॉय करना। जो घास है उसकी खुशबू लें, अपनी चाल को एंजॉय करें, माहौल को महसूस करें। बहुत ज़्यादा बाहर, वाइड बॉल, मीर ठक्कर अंपायर, इनके द्वारा स्कोर आगे बढ़ता हुआ 8 विकेट पर 116, 116 फॉर 8। आप देख रहे हैं GCH प्रेजेंट्स बिलमार्ट GCH क्रिकेट सुपर लीग सीजन 1। पहला मुकाबला बालासिनोर टाइगर्स टॉस जीतकर बॉलिंग करते हुए, मार्को पोलो लायंस बैटिंग करते हुए। चंद्रास और रौनक शेठ ने अच्छी शुरुआत करके दी थी, 29 पर पहला विकेट गिरा था, लेकिन उसके बाद नियमित अंतराल पर विकेटें गिरती रही। पहली पारी की विशेषता ही ये रही है, हर प्रकार के विकेट हमने देखिए, LBW, बोल्ड, कैच आउट, रन आउट। आखिरी गेंद इसको पुल कर दिया है, वहां पर रोका एक बार फिर से हस्तीव ने, चौका नहीं जाने दिया। हालांकि 2 रन जरूर मिल जाएंगे। बकुल मिस्त्री अब जाकर अपने घर में सही सलामत। 118 रन 8 विकेट के नुकसान पर अंतिम स्कोर, और मैच जीतने के लिए 119 रनों की चुनौती। सभी खिलाड़ी पारी समाप्ति की खुशियां यहां पर महसूस करते हुए। आरिश 4 ओवर 25 रन, कोई विकेट नहीं। तो यह समीकरण है, बहुत आसान समीकरण कहा जाएगा। पहली पारी में कोई भी 6 नहीं लगा, यह भी एक विशेषता रही। बकुल मिस्त्री बहुत अच्छी पारी उन्होंने खेली आज। और अब आप देख रहे हैं कि ऑरेंज आर्मी, संतरे की तरह ऑरेंज कलर, चहकता हुआ, महकता हुआ, दमकता हुआ, बहुत ही भव्य प्रदर्शन। विकेटों के पीछे दिनेश पटेल ने अच्छा काम किया, आरिश मंसूरी ने अच्छी गेंदबाजी की, विक्रांत रामभिया, हितेश, सलील बाबर देसाई, ईशान, देवांग, हस्तीव, सभी ने एड़ी चोटी का जोर लगाया और गेंदबाजी और क्षेत्ररक्षण में अच्छा काम हुआ है। अब बल्लेबाजों को 119 रन बनाने हैं। स्कोर कार्ड और बॉलिंग कार्ड आपके सामने कुछ समय बाद रहेगा, लौटेंगे कुछ दिन बाद। धन्यवाद।
Morning, everyone, and welcome here at Western Railway Sports Association ground in Mahalakshmi, where you are witnessing GCH, that's Garwari Clubhouse, presents Billmart GCH Cricket Super League Season 1, and the tournament opener between Balasinor Tigers and Marco Polo Lions is underway. First innings just got over. 118 was the score posted for the loss of 8 wickets by Marco Polo Lions, and 119 is the target to win this match for Balasinor Tigers. So a small huddle going on between players of Marco Polo Lions, led by Dilip Agarwal, the skipper. We are thankful to our title sponsor Billmart, apparel sponsor J.K. & Company, cricket balls by Eagle Infra Industries Limited, caps by Neo Designs, fours by Light Digital, sixes by Samir Pete, Stainless Designer Studio. We are thankful to them for sponsoring Man of the Match, Beetle Leaf Company, who have sponsored cricket pad sleeves, and Venture Catalyst Group, who are team sponsors for Sapient Leopards. This match is officiated by Mihir Thakkar and Sriram Krishnan, both the umpires. Right now on the ground, scoring done by Arushi Tamse and Prajakta Desai. The cricket tournament comes to you live on YouTube channel of Garwari Clubhouse, just GCH. We would also like to welcome owner of Marco Polo Lions, Ritesh Sukheja. This team has got two sponsors, India Gate and Ladu Samrat. And on the other hand, Balasinor Tigers, owned by Prateek Shah. A very colorful opening ceremony happened today. We have had Raj K. Purohit Saab, the Vice President of the club, doing the inauguration. Mr. Gautam Shah from Billmart was also present with us. Mr. Deepak Patil, Joint Secretary of Apex Council of MCA, was present. Mr. Arman Malik, Treasurer, was also with us. We also have Shri Ganesh Iyer, Member of Governing Council for MPL, with us. This opening ceremony was attended by Managing Committee of Garwari Clubhouse, Shri Raj K. Purohit, Vice President, Shri Manish Ajmera, Treasurer, Shri Mohit Chaturvedi, Srimati Hina Cheda, Shri Nitin Dalal, Cyrus Gorimar, Shri Ajay Kadakia, Shri Nainesh Sangvi, Shri Rajiv Shah, Shri Rohit Shah, Shri Nilesh Sheth and Shri Pankaj Shah were also present. So the Royal Blue Color Army So Vikrant Rambia and Dinesh Patel are the openers. Jersey number 1 and jersey number 7 respectively. Chandras the wicket keeper.
Dilip Agarwal to start the proceedings from the WRSA pavilion end. Very handsome cricketer, Dilip Agarwal himself. Played a useful knock, scored 2 boundaries, one on the on and one on the off. Unfortunately, couldn't quite carry his innings. Rahul was one of the best scorer in the first innings with 25. Chandras and Ronak also played well, supported well, and then Bakul Mistry, not to forget, chipped in with few runs. 120 balls, 119 required. So Lions and Tigers. First delivery, a smart sweep shot, squarish shot, and that was a beautiful Allied Digital 4. Dinesh Patel coming in as an opener, never easy. You do wicket keeping for 20 overs and then you come in as an opener. Adam Gilchrist did that. And popularly known as Dino. Good flight and nicely rolling his wrist over that ball, and 4 runs of the very first ball. Golden 4, Allied Digital 4. Dilip Agarwal rubbing that white leather ball on his track pant just to keep the shine. Right arm over. Another flighted delivery, and this time whacked. Maybe in the arc, out of the park. Yeah, that's a 4 runs. Allied Digital 4. Dinesh Patel, he doesn't want to waste time. Doing a bit of gardening there after playing 2 good shots on the onside. But look at him. He has played on the onside and he's doing gardening on the offside. So that's the beauty of this game. Dinesh Patel. Dilip Agarwal will have to bowl a dot ball. First 2 balls and 8 runs already. 118 required now. Current run rate 24.02. This time going for a big heave in the air, and that was in no man's land, and they will go for 2. Score 10. Score 10. Score 10. Dilip Agarwal now getting ready. First dot ball of the second innings. Oh, look at that shot. Are we going to see first Samir Pete 6? Yes, it is. First Samir Pete 6. That was a splendid shot. Bending on his knees, and such a delightful sight. Dilip Agarwal going for a big whack in this over. 16 runs so far. 2 Allied Digital boundaries and 1 Samir Pete 6 in this over. That is how you play in power play. Powerful cricket in power play. 1 over 16 runs. 4-4-2-0-6-0. That's how the ball-wise distribution of runs. Now 114 balls, 103 to win. First over was bowled from the skipper. And now
Next over shall commence from the far end. Definitely there will be some pressure on the bowler who is coming in to bowl over number 2, because 16 already conceded in the first over. Ronak Sheth. Very few cricketers do opening bowling and opening batting in cricket. They are definitely all-rounders. One such name that comes to my mind is Neil Johnson of Zimbabwe, who used to do opening batting and bowling for Zimbabwe. Although had a very short career, but a player to watch out. So similarly, although he's bowling over number 2, but then definitely the opening bowling, as they say, from both the ends, and Ronak Sheth came in as an opener and has come in as bowler for over number 2. So some problem there. Umpire Mihir Thakkar signaling few people to probably sit down at the boundary line. There are a few people who were very close to boundary fence. Ronak Sheth, lefty bowler and lefty batter. Vikram Rambia facing the first ball of his innings, as all the 6 deliveries faced by Dinesh Patel. This time the first delivery, there was a loud appeal into the block hole, led by 17 without loss. We welcome all the spectators who are watching this live telecast on YouTube, all the members of GCH. We welcome you. Hope your near and dear ones are playing in this tournament, and you would keep watching, keep loving and keep supporting our own GCH Cricket Super League. First time ever in the history of GCH, 48th year, and very soon we are going to celebrate our Golden Jubilee year, and I'm sure the managing committee has a lot of plans. The countdown has begun for the Golden Jubilee, slowly and steadily, and we will have lots and lots of programs and functions in the Golden Jubilee year. So if you are a member of GCH, you are really lucky one. Bowls from the edge of the crease, Dinesh Patel this time. Drives it towards Vadish Midon. Power play. 17 without loss. Ronak Sheth rubbing the ball on his t-shirt. Left arm over. Oh, beautiful. That was a Jaffa. Dinesh Sheth was looking confident, but then beating him itself is a big win for Ronak Sheth. That will now put some doubt in the minds of batter, and whether Ronak Sheth would be able to capitalize. Let's wait and watch. 17 without loss. Oh, drilled above bowler's head, and this is a fantastic 4, Allied Digital 4. No need to run for that. That is what you expect from your opening batter in power play. Score 21.
Oh, what a shot that is. Shot of the day. And this will be Samir Pete, 6 number 2. Score 27 without loss. Very stylish batting today by Dinesh Patel. In Gujarati they say bhangi naku, todi naku, bhukko kari naku. That kind of a batting. And it's 27 at the end of 2 overs. And just imagine 27 is the team score and 26 by Dinesh. Hope Dinesh Karthik gets some motivation from Dinesh Patel. As Dilip Agarwal gets ready to bowl next over. Reminding me of 96 World Cup, the Jayasuriya Romesh Kaluvitarna combo. And yes, Dinesh Patel loses his partner. Stump to stump ball, and Vikrant Rambia wanted to make a room for himself and castled him. Dilip Agarwal takes revenge of the first over, bowls a straighter one. Look at that release, and castled him. The furniture is damaged, and raising his fingers, rejoicing, and Marco Polo Lions have taken first wicket. 27 for 1. Vikrant Rambia gets out. New man in is Aryan. $27 for 1. But Dinesh Patel is going great guns. He is unstoppable today. But on the other hand, yes, Dilip Agarwal has made his team believe that if we can't get Dinesh Patel out, at least we will keep him away from the strike. Maybe, who knows? There's a plan up his sleeve. Dilip Agarwal, he's an old war horse, getting younger day by day. And what a smooth bowling action he has. Physically fit, mentally fit, Dilip Agarwal. Although couldn't contribute much with bat, but he is bowling well in his next over. Now what Dilip Agarwal has done is, by taking first wicket, he has put Tigers on the back foot for the moment. That was a long hop, and I think, yes, Dilip Agarwal gets another one. Oh my God, this is unbelievable. Dilip Agarwal
making a strong comeback. He is a captain with responsibility, authority and accountability. I will own it up. I gave away a lot of runs in first over. I will make the comeback. And look at that, trimming the bails above the stumps and both the wickets by way of clean bowled. Now that is what you call quality bowling. Aryan gets out or not, and Newman in is Amit. Now lions are roaring, and the roaring sound you can hear. Newman in is Amit Das. Amit Dasani. You are watching GCH presents Billmart GCH Cricket Super League Season 1 opening match. Marco Polo Lions, after being invited to bat first by Tigers, scored 118 for 8. 119 is the target. First over we saw some heroics by Dinesh Patel, but all of a sudden, two back-to-back wickets. There's not a single run that has come off this over. That's what Dilip Agarwal is. He gave away a lot of runs in his first over, but this over, he is miser. Are we going to see the first maiden over of the tournament? Wait and watch. Just so that's the first double wicket maiden for Dilip Agarwal, and what a cricketer he is. Great comeback by him. There is a saying in cricket that comeback is better than setback, and that's what Dilip Agarwal, a lion-hearted cricketer. Score at the end of 3 overs is 27 for 2. Dinesh Patel was virtually kept away from the strike, and that has put some pressure now. 102 balls and 92 to win. Ronak Sheth will continue. We have second match coming up in the afternoon. Sapient Leopards taking all season's Panthers. Comes steaming in, but Dancy. What a shot that was, but brilliantly fielded there by Rahul. Dinesh Patel is not shying away from playing his shots. He knows this is power play. The only way to apply pressure is, the mantra is clear, attack is the best form of defense. That ball shaping away from the right-hander, collected well by Chandras. Dinesh has a strike rate of 200, 13 balls and 26 runs, 2 allied digital boundaries and 1 Samir Pete 6. This time nice elbow position, good body balance, runs for a single. Dinesh Patel has also realized that he is not the only one who is going to score all the runs. So he has shown confidence in his partner Amit Dasani, who is now going to farm the strike. 28 for 2. Marco Polo Lions exploring all the options to take wickets.
This time a single on the onside. Well, the Shiten Kadakia was the fielder. One thing that Tigers will have to remember is building on a partnership. We saw lack of partnership in the first innings. First wicket partnership was 29 between Chandras and Ronak. Similarly, 27 runs partnership we saw in the second innings for the first wicket. This time, mistimed it. It was ballooned in the air. There's a fielder. And he misses it. The butterfingers. And life given to Dinesh Patel, dropped on 27. These catches are never easy. The skiers, whether in floodlight or whether in daylight, never easy. He tried just below the ball, but was not able to convert it into a catch. That wicket would have certainly put Marco Polo Lions into the driver's seat. 4 overs, 30 for 2. 89 required of 96. Dilip Agarwal will start the fresh over. Ronak Shet, 2 overs, 13 runs, no wicket. Dilip Agarwal on the other hand will bowl penalty mat over of power play. .30 for 2. Flighted ball, and look at that shot. You would want to watch it again and again. Such a photogenic moment. And a single to Dinesh Patel. Dinesh can score on all the sides, but onside is his favorite area. He has played so many shots on that direction that a stand can be named after him. 31 for 2. Dinesh Patel, 29 of 17, 31 for 2. Long hop and played behind the square. Ideally, he could have pulled that ball, but finds a fielder in Bakul Mistry. Another brilliant shot on the onside, and this time by Amit Dasani, which is a very good thing, because Amit Dasani, if he starts scoring runs, that will boost the morale and confidence of Dinesh Patel as well. Right now it is one-man show, but then it's a teamwork. Steps forward, and Dinesh Patel again very strong in his onside zone. 33 for 2. 86 more required. We are in over number 5. Dilip Agarwal now bowling to Amit Dasani. Dasani goes above the bowler's head towards the side screen. They will get at least single, if not more. And at the end of over number 5, score now 34 for 2, chasing 119.
Ronak Sheth starting the fresh over. That ball slanting away from the right-hander, pitched it up. That's what you got to do. Keep pitching it up. You hit the deck and hit it smart. So many left arm fast bowlers and medium pacers. Well, definitely Zair Khan and Mitchell Stark are two outstanding names that come to my mind. And of course, Sultan of Swing. Another good delivery, folding his arms. Lucky that was a social distancing maintained by Amit Dasani between his bat and ball. 34 for 2. Oh, look at that pull shot. That is a delightful Samir Pete 6. In the arc, out of the park. Amit Dasani showing his class. That's what you got to do. Stroke selection is going to be very important. Punish the loose ball. Give respect to the good ball. Oh, that was a bad shot. That was definitely not required. Dinesh Patel would certainly give him some piece of advice in the middle. 40 for 2. Chasing 119. Dinesh Patel 30 of 18. Amit Dasani 9 of 11. Ronak is into his third over and has given away 19 runs so far. Another cracking shot, and that was a pull shot that is a delight to watch. A light digital 4. A spectacular shot by Amit Dasani. He has got good height, showing his anger. That's what you got to do. Almost a half tracker, very easy to negotiate. Excellent timing, transferring his weight onto that ball. And there she goes. 44 for 2. I think Amit Dasani also realizes that this is the last over of power play. Make the hay when sun shines. 44 for 2. 85 required now. Lower full toss, driven nicely. Finds a fielder. That was a throw, but a single. 6 overs, 45 runs and 2 wickets. बॉलिंग में तब्दीली. अब दिलीप अग्रवाल ने विशाल को गेंदबाजी थमाई है. विकेट कीपर चंद्राश स्टंप्स के ठीक पीछे. पावर प्ले खत्म हो चुका है. क्षेत्ररक्षण फैला दिया गया है. अमित दासानी और दिनेश पटेल की जोड़ी अब जम भी चुकी है, क्योंकि 27 पे पहला विकेट गिरा था.
उसके बाद दूसरा विकेट भी तभी जल्दी गिरा। इस बार गेंद लेग स्टंप के बहुत ज़्यादा बाहर रही थी। देखना है तेज कदम भागते हुए अमित दासानी और दिनेश पटेल। अंपायर श्री राम कृष्णन अब वाइड देते हुए कुल मिलाकर 3 रनों का इजाफा। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 48। 2 विकेट पर लूजनर बॉल थी अमित दासानी। लॉन्ग हॉप गेंद थी और उसको खेल दिया विकेटों के पीछे। देखना होगा वहां पर अलाइड डिजिटल 4 हो सकता है। जी हाँ, शानदार शॉट, कमर की ऊंचाई से भी नीचे, मतलब लगभग घुटने की ऊंचाई तक आने वाली गेंद थी। अंग्रेजी में इस तरह की गेंदों को मली ग्रबर्स या शिन ग्रबर्स कहा जाता है, उस तरह की गेंद। और देखिए क्षेत्ररक्षण करते समय पैर बाउंड्री लाइन को छू चुका था। एलाइट डिजिटल चौका। इस बार फ्लाइट ज्यादा दी थी, चकमा दिया। 1 रन और 2 विकेट के नुकसान पर 53। बाय का रन। आप देख रहे हैं GCH प्रेजेंट्स बिलमार्ट GCH क्रिकेट सुपर लीग, जिसका पहला संस्करण आज इसका उद्घाटन समारोह कुछ घंटों पहले संपन्न हुआ। ओवर पिच बॉल थी, अच्छे से ड्राइव कर दिया और यहां पर अलाइट डिजिटल चौका। दिनेश पटेल ने वाकई में अपने बल्ले में मानो कोई जादुई स्पर्श है। जब गेंद बल्ले पर आती है तो 4 और 6 के लिए जाती है, ऐसा आभास होता है। अंग्रेजी में जिसको आप मिडास टच कहते हैं, बिल्कुल उस तरह की बल्लेबाजी, जिम्मेदारी भरी। 57 पर 2, 7वां ओवर। लॉन्ग हॉप और पुल कर दिया है, दौड़ने की जरूरत नहीं रहेगी। वहां पर रोका गया राहुल द्वारा। 1 रन और 58 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। विशाल इस बार बैकफुट पर गए अमित दासानी ने, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में खेल दिया। एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर लगने वाला अलाइट डिजिटल चौका। रन अब बहुत ज्यादा तेजी से बन रहे हैं, मानो रन बन नहीं अब बह रहे हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। दिलीप अग्रवाल ने एक जो मेडन ओवर किया था, डबल विकेट मेडन, तब ऐसा लगा था, लेकिन कुछ समय के लिए ही वो था, मानो फिनिक्स मील पलाडियम के बाहर सिग्नल पर जैसे ट्रैफिक जाम में गाड़ी रुकी थी, वैसे स्कोर रुका था। लेकिन जैसे ट्रैफिक जाम हटा और गाड़ियां तेज दौड़ने लगती है, बिल्कुल उस तरह अब स्कोर भी तेजी से भागता हुआ। 62 पर 2। इस बार हुक कर दिया है, देखना है बैकवर्ड ऑफ स्क्वायर गेंद जा रही है और यहां पर कैच आउट कर लिए गए हैं। बड़ा विकेट हासिल किया गया है, राहुल ने कैच लिया और अमित दासानी की छोटी उपयोगी पारी समाप्त होती हुई 22 रन बनाए। अमित दासानी ने स्कोर को मजबूती दी और विशाल क्रीज के कोने से इस बार देखिए ये गेंद नीचे रही, लॉन्ग हॉप हुक करना चाहते थे, गेंद के बराबर नीचे आए राहुल और खुशी का इजहार किया। जी हां, 7 ओवर 62 रन 3 विकेट। मार्को पोलो लायंस को एक सफलता मिली है और नए बैटर अब मैदान में उतरते हुए। नए बैटर है सलील बाबर देसाई। सलील बाबर देसाई ने सर पर रुमाल पहना है, रुमाल पे हेलमेट पहना है,
शारजा के क्रिकेट में आसिफ इकबाल को आपने देखा होगा कई बार, सर पे रुमाल और उसके ऊपर टोपी, गर्मी की वजह से। और सलील, बाबर देसाई, दिनेश पटेल एक के बाद एक 3 अपने जोड़ीदार खो चुके हैं, लेकिन दिनेश वहां पर मुस्तैद खड़े हैं चट्टान की तरह। हम एक बार फिर से शुक्रिया कहना चाहेंगे हमारे टाइटल स्पॉन्सर बिलमार्ट, हमारे खिलाड़ियों के यूनिफॉर्म के स्पॉन्सर है जेके एंड कंपनी, क्रिकेट बॉल के स्पॉन्सर है ईगल इंफ्रा इंडिया लिमिटेड, टोपियों के स्पॉन्सर है नियो डिज़ाइंस, 4 के स्पॉन्सर है लाइट डिजिटल, 6 इज स्पॉन्सर्ड बाय समीर पेटे, मैन ऑफ द मैच बाय स्टेनलेस डिज़ाइनर स्टूडियो, क्रिकेट पैड स्लीव्स बाय बीटल लीफ कंपनी और सेपिएंट लेपर्ड्स टीम के स्पॉन्सर है वेंचर कैटलिस्ट ग्रुप। सभी स्पॉन्सर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। गरवारे क्लब हाउस 1974 में जिसकी नींव रखी गई और आज मुंबई का एक प्रीमियर क्लब के रूप में देखा जाता है। नए ओवर की शुरुआत करेंगे रतन। काफी सीनियर प्लेयर है रतन, 8 नंबर जर्सी पहने हुए हैं। जो जापान के लोग होते हैं 8 को बहुत लकी मानते हैं। रतन, जिनको करना होगा अपनी टीम के लिए रनों का जतन, वो है रतन। दूर वाले छोर से बाएं हाथ के राउंड द विकेट, स्टंप और अंपायर के बीच से गुजरते हुए 63 पर 3, 119 बनाने हैं। बहुत ही लाजवाब गेंद, टप्पा खाकर टर्न नहीं होते हुए सीधी निकल गई थी चंद्राश के दस्तानों में। ये पहले ऐसे गेंदबाज है रतन जिसने दिनेश पटेल को शांत रखा है और ये अच्छी बात है मार्को पोलो लायंस के लिए। एक और बेहतर बॉल विकेटों के सामने, रन पूरा करते हुए दिलीप अग्रवाल ने रोका लेग बाय। मार्को पोलो लायंस का लाइन अब दहाड़ रहा है। ऐसा कहते हैं ना, शेर की झलक सबसे अलग, लायंस की जो झलक है सबसे अलग है। इस बार स्वीप करने का प्रयास था, देखिए दौड़ने की जरूरत क्या है और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में स्वीप कर दिया। अलाइड डिजिटल जानदार और असरदार चौका। दिनेश पटेल 360 डिग्री का बल्लेबाज है। ये कट करता है, पुल करता है, हुक करता है, ड्राइव करता है, लॉफ्ट करता है। ये मानो दिवाली तो खत्म हो गई लेकिन रनों की रंगोली सजाने वाला दिनेश पटेल। 40 पर पहुंचे हैं दिनेश। इस मैच के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दोनों टीम की तरफ से देखें तो खिलाड़ी बन चुके हैं। पहली पारी में राहुल को हमने 25 बनाते हुए देखा था, लेकिन यहां पर 40 दिनेश पटेल के। 68 पे 3। इस बार स्वीप किया, दिलीप अग्रवाल ने निशाना साधा था बेल्स का नॉन स्ट्राइकर एंड पर। ओवर समाप्त। रतन के इस ओवर में 6 रन आए और अब स्कोर है 69। 8 ओवर 69 रन। अब 72 गेंदों में 50 चाहिए। रिक्वायर्ड रन रेट बहुत ज़्यादा नीचे गिरता हुआ। रिक्वायर्ड रन रेट इस तरह नीचे गिरा है जिस तरह पिछले कुछ दिनों में प्याज के दाम गिरे हैं। 8 overs 69 for 3।
दिनेश पटेल लेकिन इस वक्त परेशानी का सबब बने हुए हैं। खेल कुछ समय के लिए रुका हुआ है। हमारे फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर अब मैदान में जाते हुए वो ओवर नहीं कर पाएंगे और अब दिलीप अग्रवाल अपने आप को मोर्चे पर लाते हुए टूर्नामेंट का पहला डबल विकेट मेडन ओवर जिन्होंने किया, दिलीप अग्रवाल टीम के कप्तान। देखिए दिनेश पटेल का अभिगम पूरा बदल चुका है अब दिलीप अग्रवाल के सामने। वो जानते हैं कि दिलीप अग्रवाल एक चतुर खिलाड़ी है। 41 पर खेलते हुए दिनेश पटेल 2 कदम आ गया है और वहां पर इस बार खेला है राहुल के पास। अमित दासानी का कैच जिन्होंने मुकम्मल किया था। स्कोर 70 पर 3, 49 रन चाहिए 70 गेंदों में।
दिलीप अग्रवाल चूंकि अपने निर्धारित 4 ओवरों में एक आखिरी ओवर कर रहे हैं, इसलिए ये ओवर उनके लिए भी बहुत ज़्यादा मायने रखेगा। बहुत बढ़िया फ्लाइट दी थी इस बार, बिल्कुल भी समझने नहीं दिया था। बहुत अच्छा गेंदों का मिश्रण करते हुए ललचाया था बल्लेबाज को आगे आकर खेलने के लिए। 70 पे 3, 49 रन और चाहिए। फ्लैटर बॉल थी, अब इसने थोड़ा मौका दिया था बैकफुट पर जाकर खेलने का। डीप कवर में 1 रन लेते हुए सलील बाबर देसाई। नौवां ओवर चलता हुआ, जिसकी अब पूर्णाहुति होने को है। नौ ओवर 71 रन 3 विकेट। दिलीप अग्रवाल अभी भी अपनी उसी मुद्रा में नौ ओवर 71 रन 3 विकेट। जेके एंड कंपनी हमारे एपरल्स स्पॉन्सर, आप देख सकते हैं हर टी शर्ट के पीछे चंद्रास। रतन स्वयं रणजी ट्रॉफी खेल चुके हैं। देखिए, जब आप रणजी ट्रॉफी जैसी हिंदुस्तान की अव्वल प्रतियोगिता खेलते हैं तो आपसे अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं। रतन के 4 ओवर मायने रखेंगे, जिसमें पहले ओवर में 6 रन दिए उन्होंने। सलील बाबर देसाई और दिनेश पटेल दोनों कद काठी में लगभग समान नजर आते हैं। मार्को पोलो लायंस के सामने जवाबी पारी खेलते हुए बालासिनोर टाइगर्स। इस बार बैकफुट पर जाकर टैप कर दिया, 1 रन पूरा किया है। कलाबाजी लगाई थी अपने दाहिनी ओर। इस वक्त थोड़ा शांत क्रिकेट चल रहा है। जिस तरह मधुमक्खी अपने छत्ते में शहद को धीरे धीरे इकट्ठा करती है, उसी तरह 20 ओवर 50 ओवर या टेस्ट क्रिकेट में रनों को जमा करना ये एक कला है। 72 पर 3, 2 कदम आगे आए और फिर रक्षात्मक शैली से खेला। रतन, वाकई में रतन रतन है अपनी टीम के लिए। जिस तरह जौहरी की दुकान में आप अगर चले जाएं, हीरा मोती माणिक रतन नीलम पुष्कराज पाचू पोवड़िया लसणिया गोमेद आपको मिलते हैं, वैसे रतन है अपनी टीम का रतन। धीमे से पुश किया, बल्ले के मुंह को खोलते हुए 1 रन हासिल किया दिनेश पटेल ने। (73 for 3). रिकॉर्ड रन रेट काफी कम है, अब केवल 4.45 का। इस बार बैकफुट पर जाकर सलील बाबर देसाई 1 रन और लेते हुए 74 for 3 आफ्टर 10 ओवर्स।
10 ओवर 74 रन 3 विकेट. So at this stage in the first inning, the score was 65 for 4. So they are 9 runs ahead and 1 wicket less at this stage. Bakul to bowl his first ball of the match. He was limping, had some injury, but physiotherapist has given him the treatment and he is ready to play for his side. That's very important. Salil Babar Desai enjoying that moment. He did something which was not expected, but then these kind of lighter moments keep the match alive and keep the spectators engaged. 43 not out Dinesh of 29 and 3 not out of 10 for Salil. Making a room, trying to play a square cut. And an overthrow. Now this could be costly. Although there is a backup in form of Rahul there. $75 for 3. 11th over. That was a flatter delivery. Dinesh Patel now certainly wants to carry on the purple patch that he is in. He has controlled his shots, and that's what you got to do. Play for side and not for self. He's an unselfish cricketer, Dinesh Patel. Bakul Mistry this time. Ball keeping low and single for Salil Babar Desai, Vishal the fielder. 76 for 3. That was a shortish ball and just trying to pull that ball across the green carpet, gets a single. A game of cricket has seen some of the brilliant pullers in Ricky Ponting, Arvinder De Silva and of course Virat Kohli. 78 for 3. There was a loud appeal, but umpire Sriram Krishnan ignored it. 78 for 3. With Ratan and Bakul being applied from both the ends, I think this is going to be a very interesting situation for Tigers. 11 overs, 78 for 3. So 41 required of 54. Ratan and Bakul, if they are able to take it to ball equation at least, then the match becomes interesting with couple of wickets. But cricket doesn't get played on ifs and buts. You got to keep performing, keep taking wickets at regular intervals. They need someone who can run through the side, and Ratan is the man. Bakul Mistry and Ratan are the two experienced campaigners in the side. Ratan to bowl from the far end, 2 overs 9 runs.
Tossed it up and look at that shot. Smash that. But what a brilliant catch. That is where he lost his control. Dinesh Patel was going on and on. But he wanted to go for a big one, and look at the hug that they are giving each other as if today is the World Hug Day. They have got the prize wicket. Dinesh Patel couldn't believe his luck. He was so close to his half century, could have carried on. Harshil took that catch, and Dinesh Patel, the dashing Patel, the dynamic Patel gets out. 33 balls, 44 runs, 5 fours and 2 sixes. He is certainly a valuable player, and now being replaced by Nishit. Can Ratan be a game changer? Wait and watch. He has tons and tons of experience of first class cricket, Ranji Trophy, and of course the Mumbai cricket. What I liked about Ratan is he enticed the batter to go for the shot. Sometimes in order to get a batter out, you got to serve him the food that he loves to eat. That is precisely, he invited him to play the shot that he loves, and what a catch. Lefty batter, Mishit. Lefty to lefty. Ratan reminding me of Derek Underwood of England. England used to carry Underwood like an umbrella while going for the match. Umbrella in the rains, and so is Ratan for his side. Although has a shorter run-up compared to Derek Underwood. This time played with soft ends. Mishit wearing jersey number 45. I remember Virendra Sehwag stopping numbers at the back of his shirt because he believed that there's no luck. But sometimes players choose their lucky numbers. A bit of numerology. Maybe they are consulting those numerologists like Sanjay Jumani, Shweta Jumani, Ajat Oberoi, probably getting some advice from them. Fruitful over, 12 overs, 79 for 4. Ratan 3 overs, 10 runs and 1 wicket. It's a hot afternoon, 48 balls and 40 runs. That's what I was talking about. At one stage, 54 balls and 41 runs. Now 48 balls and 40 runs. Just 1 run came off that over. So 8 overs between Bakul and Ratan are going to be the crucial overs. And with Dinesh Patel getting out, both these batters will have to start all over again. 2 good overs from here, and we have a match on our hand. Bakul coming in right arm round the wicket this time. Single for Mishit. Caution combined with aggression probably should be the strategy that they would want to adopt while chasing down the score. You just cannot hit every ball, and you cannot keep defending every ball. That's where the decision making will come into place.
the way CEOs of huge business conglomerates take decisions, those kind of decisions you need in cricket also. Right decision at right time. So this time Salil Babar Desai taking that single. (81 for 4). Required run rate 4.56. As long as it is below 6, there shouldn't be a problem. And now Bakul Mistry coming in right arm over the wicket for the lefty batter. Flighted ball. Bakul Mistry is giving it to the batter. Number 7 for Bakul and number 8 for Ratan. 7 and 8. Two magic numbers of Marco Polo Lions. When we were kids, we used to play a card game called Sat Aath. Those who have played card games, especially in Gujarati families, Aao Sat Aath Ramiye, you might want to relate those days. So 7 and 8 are hand in hand. Flighted delivery, another beautiful delivery, straightening a touch, picked up brilliantly behind the stumps by Chandras. End of over number 13. They are zipping through their overs. Ratan and Bakul. 42 balls, 37 runs. At one stage, 54 balls and 41. Now 42, 37. And if they go like this, we may see 36, 36. (82 for 4). Salil on 6 of 16. Mishit on 3 of 7. Wicket of Dinesh Patel has dented their chances to chase this down early. Ratan to bowl to Mishit. Mishit this time offering some shot, and that's good. Single. The only way you can remain in a game is by scoring runs. Dot balls are good to an extent, but you've got to keep the scoreboard moving. You do not want to feel any scoreboard pressure. This time plays on the offside. Single. (84 for 4). You are watching GCH presents Billmart GCH Cricket Super League Season 1. Six teams are in the fray to win the coveted title of the Super League. Played away from his body, chance of a catch out. Vishal Lala was slightly wide, not able to seal the deal for Ratan. Very well stopped by Chandras. Salil Babar Desai
34 required of 37. The gap is narrowing between balls and runs. And maybe, who knows, 30 balls, 30 runs we may see soon. End of over number 14. 85 for 4. Required run rate now has gone up 5.67. 34 of 36. Boundaries have dried out completely. Buckle to bowl, third over of his spell. Gentle push and a single. 86 for 4. (33 runs required of 35 balls. Flighted ball, and this time definitely a harsh treatment. There's no one to catch it, and this will be a welcome boundary. A light digital 4. Very well judged, Salil Babar Desai. Definitely took a risk, and more the risk, more the returns. 90 for 4. Nudging it behind the square. There's no one to stop. A long run for third man fielder, I guess. And they would convert it into 3 valuable runs. (93 for 4). Salil on 14 of 20. Mishit on 6 of 12. So again they are back on track. Single. (94 for 4). So now the gap is widening a bit between balls and runs. Again turn on the onside and saves a bit of energy. Salil Babar Desai walking that single. (95 for 4) after 15. अब 24 रन चाहिए 30 गेंदों में. परिस्थितियों को बदला है वहां पर सलील बाबर देसाई ने. इसके पहले 37 गेंदों में 34 चाहिए थे, लेकिन इस ओवर में वो चौके ने थोड़ा सा स्थिति सेहतमंद की है, लेकिन अभी भी खतरा टला नहीं है. आखिरी 5 ओवरों का खेल शेष आप देख रहे हैं.
विजय का जो लक्ष्य है वो अब आंखों के करीब आता जा रहा है। 98 पर 4, 21 रन और चाहिए। सलील 23 गेंदों में 16, मिशित 14 गेंदों में 7। फुल टॉस बॉल, खराब बॉल थी, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, इसको ड्राइव कर दिया है बढ़िया टाइमिंग के साथ। अब 1 को 2 में तब्दील करते हुए, और ये 2 रन काम में आएंगे 100 रन पूरे होते हुए यहां पर। सौ का माइलस्टोन। अब 27 गेंदों में 19 रन चाहिए। एक समय था जब बॉल और रन के बीच में 2 की दूरी थी, जो अब बढ़ गई है, और हर बढ़ती हुई दूरी टाइगर्स के लिए फायदेमंद। एक और वाइड बॉल। एक 101 पर 4, वाइड बॉल। 102 पे 4। ये ओवर में वाइड बॉल काफी आ रहे हैं और इसका पूरा फायदा अब कमलेश ने अपना चश्मा उतार दिया है। 102 पे 4। बेहतर बॉल थी, देखिए अपने दाईं ओर उन्होंने डाइव लगाया था लेकिन गेंद रोक नहीं पाएंगे। बहुत ही सुंदर स्ट्रेट ड्राइव। एक 103 पर 4। खराब गेंद थी और उसे नसीहत दे दी है। फुल टॉस गेंद, नो बॉल, फ्री हिट, और ये लगा हाईलाइट डिजिटल चौका। बस इसी की एक देर रही थी जिसका इंतजार कर रहे थे वहां पर सलील बाबर देसाई। नो बॉल, फ्री हिट, चौका, सारी चीजें अब बालासिनोर टाइगर्स के पक्ष में आती हुई। इस बार बेहतरीन गेंद स्टंप्स पर। अब 24 गेंदों में 12 रन, रिक्वायर्ड रन रेट काफी नीचे आ गया। कमलेश का ये ओवर खर्चीला रहा और ये ओवर ने विजय के द्वार खोल दिए हैं अब यहां पर बालासिनोर टाइगर्स के लिए। शेर की झलक सबसे अलग दिखाई दे रही थी, लेकिन अब टाइगर्स ने भी यहां पर एक मैसेज भेजा है कि शेर के जबड़े में अब टाइगर ने हाथ डाला है। बकुल मिस्त्री अब अपना आखिरी ओवर करेंगे। 108 पे 4। मेरे ख्याल से एक 20 रन कम पड़ गए मार्को पोलो लायंस को। 140 जो है ये होना जरूरी था। जब चंद्राश और रौनक बैटिंग कर रहे थे ऐसा लगा था 150 तक जा पाएंगे, लेकिन वो विकेट के गिरने के बाद पार्टनरशिप बन नहीं पाई। इस बार क्लोज टू द बॉडी बॉल को पुल कर दिया है वाइडिश मिड विकेट की ओर, और ये लगा हाईलाइट डिजिटल चौका मिशित के बल्ले से। स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ। जब 10 ओवर खत्म हुए थे स्कोर 75 पर 4 था और एक बड़ी भव्य पार्टनरशिप इन दोनों के बीच में अंजाम ली, और ये वजह है कि वो अब इस मैच को
जीतने जा रहे हैं। 22 गेंदे 7 रन। बकुल राउंड द विकेट आएंगे। अब सलील 25 गेंदों में 20 रनों की मजबूत पारी, और मिशित ने एक छोटे भाई की भूमिका अदा की। 14 पर खेल रहे हैं, 20 गेंदों का सामना किया है, लेकिन ये वो पार्टनरशिप है जिसने विजय संभव किया है। हालांकि बुनियाद उसकी भले ही दिनेश पटेल ने रखी थी और अमित दासानी ने बुनियाद रखी, और सलील और मिशित ने उस बुनियाद पर रनों के भवन का निर्माण किया। और GCH प्रेजेंट्स बिलमार्ट GCH क्रिकेट सुपर लीग सीजन 1 का पहला मुकाबला अपनी जेब में डाल दिया है। एक रन शितिन कड़ाकिया के पास। एक 114 पे 4। अब 18 गेंदे और 5 रन। 18 गेंदों में 5 रन चाहिए। गेंदबाजों ने बहुत अच्छा काम किया आज बालासिनोर टाइगर्स के लिए। मार्को पोलो लायंस को एक छोटे स्कोर तक सीमित रखा। हस्तीव ने शुरुआत करके दी, और उसके बाद विक्रम रामबिया, हितेश, देवांग, तमाम गेंदबाजों ने उसमें रंग भरे। आरिश मंसूरी ने अपने खिलाड़ियों को बहुत अच्छा संभाला। अपने वरिष्ठ खिलाड़ियों को भी उन्होंने कॉन्फिडेंस में लिया, और एक अच्छे टीम वर्क के ज़रिए अब विजय हासिल होने जा रही है। नया ओवर करेंगे हर्षिल, और हर्षिल के सामने बैटर है सलील बाबर देसाई। बाबर देसाई ने अच्छे हरफन मौला खिलाड़ी की अदा में क्रिकेट खेला। बेहतरीन गेंद फुलर लेंथ की। सबसे बड़ी बात है, दिनेश पटेल आउट होने के बाद दिनेश पटेल के रोल में आ गए सलील बाबर देसाई। इस बार एक अनोखे अंदाज में उस गेंद को टैप करते हुए खेला है। राहुल के पास जाती हुई गेंद, 1 रन और। 115 4 विकेटों के नुकसान पर अब केवल 4 रन चाहिए पॉइंट्स टेबल में अपना नाम दर्ज कराने के लिए। हालांकि मार्को पोलो लायंस के लिए भी कई अच्छी बातें इस मैच में रही हैं। इस बार स्ट्रेट ड्राइव, 1 रन और। 116 पे 4। अड़तीस रन की भागीदारी, और यहां पर बल्ले का बाहरी सिरा लगते लगते रह गया है। इस बार खराब गेंद थी और इंप्रोवाइज करते हुए खेल दिया है। मैच जीत लिया है, ऐसा हम कह सकते हैं। 6 विकेटों से भव्य विजय हासिल की है। एलाइट डिजिटल चौका लगा, और सलील बाबर देसाई जंग जीतकर अब वापस लौट रहे हैं अपनी टीम के लिए। और इस बार घुमा दिया उस गेंद को। अभिनंदन बालासिनोर टाइगर्स। सुबह सुबह जब मैं यहाँ आ रहा था, मेरे बाजू से एक ट्रक गुजरा जिसके पीछे लिखा था मराठी में, बख्ता का रागा ने ओवरटेक केला है वाघा ने। वाघ ने ओवरटेक कर लिया शेर को और पहली विजय हासिल की है। लेकिन मार्को पोलो लायंस
इनके लिए दिलीप अग्रवाल का मेडन ओवर, डबल विकेट मेडन, रतन, बकुल, उनकी गेंदबाजी अच्छी है लेकिन बल्लेबाजी में कहीं वो कमज़ोर पड़े ऐसा नज़र आ रहा है। आइए सीधा चलते हैं प्रेजेंटेशन के लिए, जब दोनों टीमें हस्तांदोलन कर रही है और दूसरे मैच के लिए हम तैयार होंगे। बट लेट्स गो टू दी प्रेजेंटेशन। So we are getting ready for post-match presentation ceremony. But before that, yeah, welcome Nitin Bhai and Pramod Bhai. Welcome, sir. Mangesh Satam, sir, we welcome you as well. आपला हार्दिक स्वागत है. Welcome. So, Ganesh Iyer, if you could join us, please. Can we have Marco Polo Lions to join us for the post-match presentation ceremony? Our distinguished guests have arrived. We started on a good note. GCH presents Billmart GCH Cricket Super League Season 1.
So let's start the... So we are starting now the... So welcome Mr. Pramod Yadav, and he's going to give away Man of the Match award to Dinesh Patel. 45 runs, 33 balls, 5 fours, Allied Digital fours and 2 Samir Pete sixes. Dinesh Patel, what a batting by him. First man to hit a 6 in this tournament. And the very first over, he opened an attack against Dilip Agarwal, and that was Dinesh Patel. Congratulations. If you could have a word with us for just 1 minute. Dinesh bhai, yes, it's never easy to do wicket keeping for 20 overs and then come in as an opening batter and then play for the side. How was the experience and how excited you are to play this league? All credit I want to give to my sir, Bista sir. My Bista sir. Because of him, I go every day 6:30 on the ground and do practice with him. And because of me, this one has happened. Thank you very much. Well, thank you so much, and we wish you good luck. Your batting reminded me in Gujarati, Bhangi naku, Todi naku, Bhukko kari naku. Thank you so much. So let's go for the toss ceremony of the second match between Sapient Leopards and All Season Panthers. Can we have Leopards and Panthers for the toss ceremony? Thank you, sir. Sir, a token of appreciation, a bouquet and a cap. It will certainly remind you of our cricket tournament. Your August presence has motivated us, sir. Thank you so much and enjoy the match. So welcome both the captains from Sapient Leopards and All Season Panthers. So Leopards and Panthers are going to fight against each other.